Good evening, everyone. Warm welcome to your own YouTube channel. We call it as Exam Now. तो आज का जो सेशन है that is a new beginning of your finance current affairs after a break of a week. And today we will be starting up with a very important discussion related to one of the most important RBI circular. This circular is not only important for your RBI grade B examination, but it is important for all the different exams you are preparing, especially NABARD as well as the other bank exams. So before I start with the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go, so that we can begin the discussion without any further delay. Circulars for the month of January. But ओके सो आई गेस एवरीथिंग इज फाइन. चलो बढ़िया. एक बार यार ये सेशन का लिंक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट एवरीबडी इज अवेयर दैट यस दिस सेशन हैज स्टार्टेड अगेन आफ्टर अ ब्रेक. एंड today's session is really very important. Mind my words, they are really very important for your upcoming examination, especially RBI, as well as I'll explicitly mention that it is important for your NABARD exam as well. ठीक है. So let's start. I'll just quickly share the link of this session so that everybody is aware that the session is live and they can join us in this particular session. I'm just looking forward for your reply, everybody, if we are good to go. Okay, few more minutes. We'll quickly start the discussion. ओके आई गेस वी आर गुड टू गो. ठीक है जी, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. एंड टुडेज सेशन इज कंटेनिंग अ न्यूज एंड अपडेट रिलेटेड टू अ प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना, शायद हमने पढ़ा भी है, बट वी हैवंट कवर्ड इट इन सच अ मैनर दैट अगर यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाए या फिर अगर कोई डिटेल्ड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, देन वी शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट फॉर श्योर. ठीक है जी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So today we have a question related to a platform, and that is RBI has issued the final directions with respect to the trade receivable discounting system. Now the question is, so what is this trades? आखिरकार ये है क्या? उसके साथ साथ we must know all the parties which are involved and the other SOPs, that is standard operating procedure under which they operate on this particular platform. तो ये समझना बहुत important है. So first of all, I'll give you a glimpse कि actually ये news है क्या. Then I'll dig deep into the trades platform. After discussing in detail about the trades platform, I will be discussing the latest update with respect to the same platform, and then we'll quickly read out the entire information we have. So firstly, to start with, on 23rd of June 2026, that is today, Reserve Bank of India has issued RBI Trade Receivable Discounting System Directions 2026 and made them effective immediately. That means they have been made effective from today itself. Purpose is basically to rationalize as well as harmonize the framework, streamline capital requirements and simplifying the onboarding for MSME sellers. तो है क्या सर ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं सर. इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर MSMEs वेयर दे कैन
get funds or where they can discount their trade receivables. अब question यहाँ पर ये है कि sir, what is this entire direction all about? This entire direction is basically to harmonize as well as to standardize, to come up with a single well-detailed description where we detailed description with respect to the trades platform, कौन register करेगा, कैसे register करेगा, how they are going to operate, and this new direction has repealed the earlier 2014-2018 trades guidelines as well as the 7 June 2023 circular has been overtaken. लेकिन जितने भी actions which have been taken under the previous guidelines or the approvals which have been given under the previous guidelines, they will be standing safe, they will be standing as it is. Now, before I run to the description, before I run to the detail of the news, first of all, let's try to understand what is TREDS. So TREDS basically stands for Trade Receivable Discounting System. Now the question is, so what do you understand by the word Trade Receivable Discounting System? I'll take a very simple example. Let's suppose I'm an MSME and I have sold some goods to the buyer. Okay? I have sold the goods to the buyer, and against the funds, against the payment, buyer has given me an invoice. Buyer ने मुझे एक invoice दिया और invoice बोल देकर मुझे कहा कि sir, I will be making the payment in the near future. लेकिन मैं तो एक MSME हूँ, which is in a situation or which is having a lack of working capital. I need funds so that I can continue my production, so that I can complete my advance orders, so that I can complete the other orders I have. लेकिन मैं अपने buyer को भी नहीं बोल सकता कि अभी की अभी मुझे payment दो, because ये तो trade का, ये तो business का rule है that yes, you have to give some time of credit so that you can earn more relevant and trustworthy buyers in the near future. अब MSME करे तो करे क्या? तो इसका सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्या है कि सर या तो MSME यहां पर लोन ले ले बैंक से, फॉर एग्जांपल थ्रू अ करंट अकाउंट, कोई ओवरड्राफ्ट लिमिट यूटिलाइज कर ले in order to manage its working capital needs, but that is tough. Second is what the MSMEs can do. Sir, MSMEs can use the same invoice as collateral, or can use the same invoice as a document of proof that I have sold the product to a party, and that product, the party has promised me to pay the amount in the near future. Now I want someone who should give me funds against this invoice. अब यहाँ पे MSME कहाँ जाए? इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है. अब जगह जगह जाकर लोगों को ढूंढ तो सकता नहीं है. तो MSMEs के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज ट्रेड्स. तो MSME कैन गो टू द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, और उस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे MSME can use this invoice as an instrument to borrow the funds, as an instrument to get it discounted. अब इसमें दो differences हैं. एक तो ये है कि आप invoice को use करो as a collateral and you borrow the loan. दूसरा जो तरीका जो trades पे use किया जाता है वो क्या? So this invoice will be converted into a financial asset, and MSME basically will be selling this instrument to a party which is known as financer, और वो financer इस instrument के बदले में MSME को funds देगा, and MSME will use those funds to run their business, to continue with their business. And this party which has given the funds, we call it as a financer. This financer will be liable to receive the funds in near future from the buyer. लेकिन ये settlement कैसे होगी? ये transactions कहाँ होंगी? What will be the process? That everything is basically being defined on the platform which is called as TREDS. ठीक है. अब TREDS में काफी सारी parties involved हैं. I will be discussing about each and every party, then I will be discussing the process flow, and then we will be going, or we will be jumping to our today's news. ठीक है जी, मोटी मोटी बात जरूर समझ आई होगी. अब इसमें जो changes किए गए हैं, those changes have been done with respect to the TREDS platform itself. The changes has been done with respect to the norms related to the TREDS platform, the conditions related to the TREDS platform, which we will be discussing in this particular session. तो सबसे पहला point from where I'm going to start my discussion is, whenever we talk about this particular platform, it contains different parties. Now the question is, which all parties are involved basically? So if I talk about these parties, the first party I have is
द सेलर, द फर्स्ट पार्टी आई हैव इज द सेलर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो सेलर वर्ड आप यूज कर रहे हैं, द सेलर वर्ड विच यू आर यूजिंग, हु इज दिस सेलर? ऑब्वियसली सर यहाँ पे जब हम सेलर की बात कर रहे हैं, सेलर इज बेसिकली द वन हु इज सेलिंग दैट इनवॉइस, हु इज सेलिंग दैट बिल। सिंपल सी बात है कि सर मैंने किसी को प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट के बदले में मैंने उसे एक बिल दिया, उसने उस बिल पे, उस इनवॉइस पे सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करके मुझे दे दिया दैट आई एम लायबल टू पे दिस अमाउंट इन द नियर फ्यूचर। उसमें कुछ कंडीशंस रिटर्न है, तो मैं हूं द वन हु हैज सोल्ड द प्रोडक्ट, आई एम द सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, पहला। सेकेंडली, आई एम द वन हु इज द एमएसएमई विच इज इन नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल, तो मैं अब सेलर बन जाऊंगा टू सेल दिस इनवॉइस ऑन अ प्लेटफॉर्म जिसके बदले में मुझे क्या मिल सके, पैसा मिल सके, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माय डे टू डे ऑपरेशंस। तो यहां पे जो सेलर है, इट इज obviously the MSME, and in trades the seller, basically first step will be the seller will upload the invoice or bill, receives early payment and must declare that the receivable is not already financed elsewhere। तो इसमें हमें सबसे पहले, मैं as a seller I will be going on the trades platform, and the moment I go on the trades platform I will be uploading the invoice कि भैया ये invoice, एग्जांपल ले लेते हैं, MSME है X और बायर है लेट्स से इन्फोसिस। इन्फोसिस ने मुझसे कुछ कंप्यूटर्स खरीदे एंड आई एम एन एमएसएमई एक्स। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर मैं एक्स हूं, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बेचे इन्फोसिस को, और इन्फोसिस ने जो प्रोडक्ट मुझसे लिए उसके बदले में ये इनवॉइस है जो कि बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहा है दैट इन्फोसिस इज लायबल टू पे द फंड्स इन द नियर फ्यूचर। सो एज अ सेलर ऑफ द प्रोडक्ट I will become the seller of this invoice as well. So first of all, I will upload this particular invoice on the trades platform. Seller uploads the invoice bill with the details की amount क्या है, due date क्या है, buyer कौन है, GST, invoices and everything is involved. So platform सबसे पहले क्या करेगा? So platform will first of all validate that seller as MSME. ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. If you are not an MSME, you are not allowed to be a seller on the MSME platform. You are not allowed to sell the invoice. You are not allowed to discount your invoices on the trades platform. So I will be first verified. The moment I will be verified, then in that case buyer verifies the invoice and accept it on the platform. तो अब जैसे ही ये invoice accept हुआ on the platform, this platform will connect to Infosys और Infosys से approval मांगा जाएगा that you are the buyer who has purchased the product from the MSME. Infosys will say yes. Are you liable to pay this amount in the near future? Infosys will again say yes कि मैं लायबल हूं। अब मान लो कि ये जो लाइबिलिटी है दैट इज ऑफ 11 लाख रुपीज विच इज ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स, विच इज ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स। अब जैसे ही ये इनवॉइस पहुंचा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, अब सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इट विल डिस्प्ले दिस इनवॉइस, it will display this invoice, and this agreement is known as factoring unit, and it will be displayed to the various financiers. Various financiers means the financiers are basically the one who wants to purchase that bill, who wants to give the funds to the MSME. but क्यों? उसका reason है, the reason is let's say 11 लाख रुपए का इनवॉइस है and they will be purchasing at 10 lakh. And the moment they have purchased it for 10 lakh, after 2 months they will be receiving 11 lakh rupees from Infosys. तो वो जो 1 लाख रुपए उन्हें एक्स्ट्रा मिले, that is going to be their commission, that is going to be their service charges for which they are basically providing the funds. तो यहाँ पे कौन कौन फाइनेंसर हो सकता है? सब बैंक्स हो सकते हैं, NBFCs हो सकती हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और NBFC भी कौन सी? विच इज रजिस्टर्ड एज अ फैक्टर। फैक्टर बेसिकली है क्या? सब फैक्टर इज एन or a financial institute which basically finances the invoice, तो उसे हम फैक्टर बोल देते हैं। सो अब यहां पे क्या होगा सर? व्हेन इट इज डिस्प्लेड इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। अब उसमें से खरीदेगा कौन सर? दैट विल डिपेंड ऑन द बिडिंग। बिडिंग का मतलब जो लोएस्ट बिड करेगा वो खरीद लेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले फैक्टर ने बिड किया दैट आई एम रेडी टू पे 10 लाख रुपीज, दूसरे ने बिड किया आई एम रेडी टू पे 10,20,000 रुपीज, आई एम ओके विद 80,000 रुपीज ऑफ कमीशन। फैक्टर 3 आया, फैक्टर 3 ने कहा नहीं नहीं सर मैं तो 10.5 लाख भी देने को तैयार हूं। तो अब इन तीनों में से
अब इन तीनों में से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो फाइनेंसिंग है वो कौन करना चाहता है? सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग जो है वो फैक्टर 3 करना चाह रहा है, मतलब मिनिमम कमीशन कौन चार्ज कर रहा है? फैक्टर 3। इफ आई एम अ सेलर, ऑब्वियसली मुझे 11 लाख के बिल के बदले में ज्यादा पैसा चाहिए होगा, तो मैं ऑब्वियसली आई विल गो विद द 10,50,000 एंड आई विल एक्सेप्ट हिज ऑफर। द मोमेंट आई विल एक्सेप्ट द ऑफर, द फंड्स विल बी ट्रांसफर्ड। तो अब क्या होगा? The platform displays factoring units to the multiple financiers, and financer plays their bid, that is the discount rate in terms of percentage, 10%, 5%, 4%, or in terms of amount, and bidding is transparent as well as competitive. ठीक है, अब जिसने बिड जीती, सेलर रिव्यूज द बिड and select the best offer, that is the lowest discount or the highest value, and platform confirms the selection. अब मैं X हूं, I will confirm कि I'll go with F3 because F3 is ready to pay me 10,50,000, so I'll go with him, I'll say okay, and that bid is basically accepted. अब क्या होगा सर? जो invoice due है after 2 months, the invoice against which I am supposed to receive the funds after 2 months, I will be receiving the funds today. तो मुझे 11 लाख नहीं, मुझे 10,50,000 रुपए मिले, I am okay with it. The moment I receive those 10,50,000, the financer discount the invoice and pays the agreed amount to the seller, and funds are credited only to the seller's bank account. यहाँ पे जो पैसा है that will be credited to the bank account. As I said, it is transparent. अब क्या होगा? The moment funds are transferred, along with that, seller will assign that invoice on the name of the financer. तो seller क्या कहेगा कि I am X, earlier I was responsible to receive the funds against this particular invoice from Infosys, but now I am assigning this authority, now I am assigning this capacity, this capability to someone else, and that someone else in my transaction is F3. So F3 will get the assignment. That means F3 will be assigned with that particular invoice, and its registration will be done on the central registry as per the RBI regulation, ताकि सबको पता हो कि इसके बदले में पैसा किसको मिलने वाला है. Even the Infosys is aware that now I will be liable to pay the amount to F3, not to the X. अब क्या होगा? So buyer pays financer in the near future. On the due date, buyer pays the full invoice amount to the financer through the platform again using the authorized payment system, and then finally the settlement is done. The platform facilitates seamless settlement. Transaction is closed and recorded. So all the parties, they can view the status as well as they can view the transaction history as per the given format. अब इसमें कुछ और platforms इन्वॉल्व है. सबसे पहले सर ये जो ट्रेड्स है, व्हाट इज इट? सर इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहां पे सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है. सो आई वुड से ट्रेड्स इज अ प्लेटफॉर्म, and the one who operates it, we call it as TREDS platform operator. So TREDS platform operator is the one who operates the digital payment or the digital platform. It validates the invoices as well as the participants. It runs the bidding and settlement. It files assignment with the central registry and keeps the custody of master agreements and records. तो जो भी आपके master agreements है उसकी custody किसके पास रहेगी? It will stay with the operator. इसमें एक रोल आता है इंश्योरेंस कंपनी का, जो कि RBI ने recently allow किया था, where RBI says that insurance company can also provide credit insurance cover to the financer. मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये है अगर मैं इसे बनाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, मतलब ये है कि एक्स गया था ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे, और उस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से उसने पहले अपने बिल को रजिस्टर किया. रजिस्टर करने के बाद इट गॉट डिस्काउंटेड, एंड नाउ F3 बिकेम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवॉइस. और ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है, दिस ट्रांजैक्शन इज डन विदाउट रिकर्स. विदाउट रिकर्स का मतलब क्या है? विदाउट रिकर्स, कोई लोग इसे विदाउट रिकोर्स भी कहते हैं. इसका मतलब ये है दैट X is not liable that whether Infosys will pay or not. Platform is not liable that whether Infosys will pay or not. Only and only Infosys is liable to make the payment to F3. लेकिन अगर Infosys F3 को पेमेंट नहीं करता, in that case F3 cannot challenge X, F3 cannot challenge platform. तो इसका मतलब F3 has that risk. अगर F3 के ऊपर वो रिस्क है, then what can F3 do? Sir, F3 can get this invoice insured. तो वो इस इनवॉइस को इंश्योर करा सकता है अगेंस्ट अ प्रीमियम. और अगर नियर फ्यूचर Infosys do not pay back, the buyer of the product do not pay back
then in that case insurance company will give the claim to the party, the financer, in our example that is F3. समझ आई ये बात? तो इंश्योरेंस कंपनी का ये रोल है. और लास्ट में एक पॉइंट आता है दैट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट. सो गवर्नमेंट नोटिफाइड ट्रस्ट may provide guarantee cover to the financer. If you don't want to go to the insurance companies, you can even go to the credit guarantee fund trust which have been set up by the government. जैसे हमने बहुत बार बहुत सारे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के बारे में पढ़ा है, तो उन क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के पास आप जा सकते हैं एंड यू कैन गेट द गारंटी अगेंस्ट योर इनवॉइस और अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बिल. तो दोनों ऑप्शंस हैं, यू कैन एंजॉय ईदर ऑफ देम. एंड दोनों ही केसेस में हियर यू हैव टू पे सर्टेन सर्विस चार्जेस, हियर यू हैव टू पे द प्रीमियम जो आपको ज्यादा सूटेबल लगे, जो आपको एलिजिबल लगे और जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो. एज अ F3 you can go, that means as a financer you can go and enjoy the funds. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट. ये जो बाकी सारे पॉइंट्स इस पे लिखे हैं उसके लिए I have to dig more deep into it and I will be discussing the point one by one. But because of this commission seller profit margin will going to decrease, will that be okay? टीना, इसमें दो पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट तो ये है कि जब सेलर ने, मान लो मैं हूं, मैंने कंप्यूटर्स बेचे और जब मुझे कंप्यूटर्स बेचे थे मुझे पता था कि इन्फोसिस हाथों हाथ तो पेमेंट करने वाली है नहीं, तो मेरा जो कॉस्ट था लेट्स से वो 10 लाख था, मैंने इंटेंशनली उसका प्राइस बढ़ाकर 11 लाख कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि जो मुझे पैसा लेट मिलेगा मुझे उस पर इंटरेस्ट भी चाहिए. आई वॉन्ट सम रिटर्न ऑन दैट बिकॉज आई एम गिविंग द प्रोडक्ट्स टुडे बट आई विल बी रिसीविंग द फंड्स इन द लेटर पार्ट और इन द लेटर टाइम. सो इन दैट पर्टिकुलर केस I have already managed my profits. I have already managed my delays. I have already managed the returns which I would have earned if I would have got the funds on the very first go, on the very first day of trade. If that trade would have been settled. तो मैंने ऑलरेडी उसे बढ़ा लिया था. अब पॉइंट ये है कि सर इन्फोसिस मेरे साथ ये काम करेगा क्यों? क्योंकि इन्फोसिस को पता है कि मुझे 2 महीने बाद पैसा देना है, इससे नहीं लूंगा किसी और से लूंगा, वो भी इनवॉइस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा. तो इट्स अ ग्राउंडेड प्रैक्टिस, ये होता ही है बिजनेस में. अगर आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ बल्क बायर, तो वहां पे एक पॉइंट दिया जाता है, इफ यू विल बी परचेजिंग इट ऑन कैश आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट. दे कॉल इट एज CD, कैश डिस्काउंट. इट इज वेरी कॉमन टर्म विच इज यूज्ड इन द डे टू डे मार्केट. तो बहुत बार पूछा जाता है CD कितना है? 2%. मतलब कि अगर आप आज पे कर रहे हो तो 2% का डिस्काउंट 11 लाख पे, नहीं पे कर रहे तो भैया पूरा 11 लाख दो. तो मैंने अपने आप को ऑलरेडी वहां पे कवर किया है. एज अ सेलर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड माई सेल्फ अगेंस्ट दैट डिले. इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टीना? ठीक है, तो मैं एक बार आपको अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे चलती हैं वो देख लो, दोबारा देख लो, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए. सबसे पहले क्या होगा? द MSME, द सेलर ऑफ द गुड्स, that seller should be an MSME. Then only they can upload the invoice or bill on the trades platform. Then the platform will check that the invoice is genuine and the seller is truly MSME. First point. Second is the buyer will accept that particular agreement, that particular invoice, that particular unit, which we call it as factoring unit. Once accepted, the obligation to pay becomes strong as well as enforceable because almost it's like a written instrument and it will become a negotiable instrument that yes, Infosys is liable to pay. So after acceptance, buyer cannot later say that I will not pay because of the quality issue, at least not through the trades acceptance mechanism itself. Then the platform will invite bids for the multiple financiers who all are willing to finance that particular bill, and this is one of the most important feature of trades because it creates competition amongst the financiers which can help the seller get better discounting terms. After winding a bid or after completing the bid, the winner is selected. The financer pay the seller, that means the MSME जिसने अपना वो इनवॉइस दिया था उसे पे करेगा. The receivable is assigned to the financer, वो जो receivable है that will be assigned to the financer, वो factoring unit will be assigned to the financer and the assignment must be filled with the central registry. तो हमने central registry that is CERSAI पे भी उसे रजिस्टर कर दिया ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए. After that the buyer obligation is finished, और आप ये कहो कि after that the seller obligation is finished. Buyer obligation will now shift not to the
now shift from the seller to the buyer of the फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और दैट फैक्टरिंग यूनिट. तो जो भी आपका फाइनेंसर है उसके नाम पे आपकी ऑब्लिगेशन शिफ्ट हो जाएगी. आई वांट टू से नाउ इन्फोसिस इज लायबल टू मेक द पेमेंट टू द financier, that is F3 in our example, but not to X. So the platform will help in smooth settlement through an authorized payment system, and it can also support transactions that are financed, discounted, or even unfinanced. If the financier want और फाइनेंसर को लगे कि भैया 2 महीने बाद इन्फोसिस ने पैसे देने हैं लेकिन मुझे आज पैसे चाहिए, तो फाइनेंसर उसे दोबारा भी डिस्काउंट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस के पास वो F3 के पास वो इन्फोसिस का इनवॉइस है, तो F3 कैन इवन फर्दर सेल इट टू F4. तो आपने यहाँ पे 10,50,000 रुपए लिए थे और हो सकता है कि 15 दिन के बाद यू आर रेडी टू सेल इट एट 10,60,000. अगेन द सेम प्रोसेस थ्रू द बिडिंग, एंड नाउ F4 विल बिकम the party to whom Infosys is liable to make the payment. तो ये discounting, rediscounting is allowed. Whenever I use a word discounting, discounting basically means against a financial instrument. You purchase a financial instrument not on its face value. For example, the face value is 11 lakh rupees. That Infosys is liable to make the payment of 11 lakh rupees after 2 months to X. So you are purchasing it at 10% or maybe 5% discount, which means you have purchased it for a value of 10,45,000. 10,45,000. अब ये जो डिस्काउंटिंग हुई, ये डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि ये जो 5% आपने कम पे किया, वो इसलिए कम पे किया बिकॉज यू विल बी रिसीविंग द अमाउंट आफ्टर 2 months, एंड दैट 2 months ऑफ इंटरेस्ट कह लो, दैट 2 months ऑफ वेट कह लो, या फिर वो 2 months के लिए जो पैसा यूज करने के लिए F3 ने दिया था X को, उसके बदले में उसने ये 5% कमाया एज अ रिटर्न. दैट विल बी इन आवर एग्जांपल 55,000. ठीक है जी. हाउ द शिफ्ट इन ऑब्लिगेशन बी इन्फॉर्म टू द इन्फोसिस इन दिस केस? सर, इन्फोसिस को हर एक पॉइंट पे वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी बिकॉज जब इन्फोसिस ने उसे एक्सेप्ट किया था, इन्फोसिस वाज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड, तो उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके बारे में अपडेट इन्फोसिस को किया जाता है. और जिस दिन वो ड्यू डेट आती है, इन्फोसिस विल चेक दैट हु इज द वन आई एम ऑब्लिगेटेड टू पे. उस पार्टी को इन्फोसिस पे कर देगा. मे बी वो F3 हो, F4 हो, F5 हो, या मे बी F6 हो. उस पे आ रहा हूं, कौन ऑपरेट करता है इन प्लेटफॉर्म्स को, उस पे आ रहा हूं. इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है? हु इज द बायर, हु इज द सेलर? ये बायर इज नॉट द बायर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. द बायर इज द वन हु हैज परचेज्ड द गुड्स. परचेज्ड द गुड्स यानी कि इन्फोसिस. ठीक है. सेलर इज द MSME यानी कि X. फाइनेंसर इज द F3 हु इज discounting, who has purchased that invoice at a discounted price and is ready to fund the MSME so that they can manage their capital requirements. And what is this factoring unit? The invoice or bill uploaded on the platform is known as a factoring unit. और इस पूरे प्रोसेस को factoring कहा जाता है. Now, the economic प्रॉब्लम क्या थी बिहाइंड डिजाइनिंग दिस ट्रेड? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? सर, RBI ने कहा कि MSME दे रिमेन constrained in turning trade receivables into liquid funds. It's very difficult for them and they need the funds on regular basis because they have that cash problem. So TRED was created an institutional mechanism to address this cash problem by enabling financing of MSME receivables from corporate buyers who can be the F3. As per my example, it can be a corporate buyer or it can be, who can be the buyer of the product. So the buyer of the product can be a corporate buyer, like the example I used, Infosys. It can be a government department, it can be PSU. And who can be the financer? So the financer can be banks, the financer can be NBFC factor, the financer can be any other authority which is capable, eligible to participate on this particular platform as a financer. Now the question over here is, so which is an entity allowed to do factoring business? So this entity should be eligible under the Factoring Regulation Act 2011. That could be bank, NBFC factor and other financial institute which is allowed. अगला पॉइंट आता है कि the system therefore sits at the intersection of working capital finance, invoice discounting and payment settlement infrastructure. तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो system है, it allows to achieve the working capital finance,
it allows the invoice discounting as well as it allows the payment settlement. How an entity can operate a trade platform, the question which was asked by Saurabh. Saurabh, तो ये जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर कौन हो सकता है और उसके ऊपर क्या कंडीशंस है, प्लीज पे अटेंशन. As per the 2026 direction, RBI say that any entity seeking to operate or seeking to become an operator of a trades platform must do under the RBI master direction on authorization to operate a payment system. So whosoever is allowed to operate a payment system as per RBI guidelines is allowed to operate a trades platform as well. The entity must be a company which is incorporated in India, registered under Companies Act, as well as its MOA, that is Memorandum of Association, must cover trades activity. तो जो आपकी company है, that should be registered in India and it should have the MOA that I will be involved in the trades activity. If the applicant is already regulated by another financial sector regulator, for example a bank or for example mutual funds, I'm just taking an example, तो उस केस में they have to seek the permission from SEBI and SEBI will give them a no objection certificate that I allow you to become a financer on the trades platform, then only you can go for it and you must apply with no objection certificate within 45 days of obtaining it. जिस दिन आपको वो ऑपरेशन स्टार्ट करने, as a operator you want to participate in that particular case, you need to seek a no objection certificate from the regulator under which you are regulated. Foreign direct investment is to be guided by Government of India's FDI policy. That means FDI is allowed in the trades platform and it will be allowed as per the FDI rules which are defined under FEMA rules. We all know that. Now capital requirement here, this is very important. One of the most visible update is the minimum net worth requirement. So the minimum net worth requirement of trades platform operator is 25 crores. So pehla, you should be registered as a company. Second, तो पहला क्या था, so you should be registered as a company. You should be eligible to run a payment system in India as per the RBI norms. Third point is you should get NOC. You should have the NOC from your concerned regulator within 45 days, and then you must have a net worth of 25 crore rupees. An applicant must submit a statutory auditor's certificate existing. So if you are applying, you should be applying through a Pravaha portal. अगर आपको ये approval चाहिए that you want to run a trades platform, you should apply through the Pravaha portal on the RBI. We all know about this portal. तो आप portal पे apply करेंगे and you should be attaching a statutory auditor certificate. But मान लो that you are already an operator who is running a trades platform, then you have to meet this minimum net worth criteria by 31st March 2028. अगर आप नए बनना चाह रहे हैं तो you should fulfill it from today itself, है ना? But if you are existing trades platform operator, then in that case you should have the net worth requirements of 25 crores by 31st of March 2028. And this net worth is not only at the time of seeking the license, but you should maintain this net worth requirement on regular basis, on ongoing basis. ठीक है जी. So remember that the streamlined capital requirement for authorized entities in line with other non-bank payment system operators, तो सबके लिए this will be defined 25 crore rupees. Now how the onboarding can be done? So RBI now explicitly lists the participants who can be a seller, who can be a buyer, who can be a financer. It has also allowed the insurance companies as well as it has also allowed the credit guarantee fund trust notified by the Government of India that yes, you can register on a trades platform. The platform must ensure that seller is MSME, that funds due to the seller are credited only into the seller's bank account, and the buyer due diligence is carried out under RBI KYC framework. तो भैया जो eligible है to make the payment at the end on the due date, उसका KYC भी करना होगा as per the RBI norms. अब अगला पॉइंट है सर, इन कंपैरिजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आरबीआई जरूर बनाएगा. इन कंपैरिजन विद द ओल्डर फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क इज मोर रीडिफाइंड. क्यों मोर रीडिफाइंड है? 2018 में जो गाइडलाइंस थी, दे रिक्वायर्ड वन टाइम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, authorization and standardized mechanism for buyers and sellers. But जो 2026
डायरेक्शंस हैं, दे रिटेन दी compliance score, but RBI own press note specifically says onboarding for MSME sellers have been simplified. तो पहले भी क्या था, you have to register, but now it is easy to register if you are a MSME. So the direction of travel is clear, less procedural friction for MSME, but no relaxation in the buyer side. So if you are an MSME, you want to register on a platform, पहले के मुकाबले अब easy है, but बाकी सारी parties के लिए it is still the same, you have to follow all the procedures. Now, what is the legal structure of TREDS transaction? Once the factoring unit is accepted at the platform, it gets the same power, same eligibility as that of a physical instrument or a written agreement under the Negotiable Instrument Act as well as Factoring Regulation Act. मतलब वो जो invoice है, जैसे वो invoice ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट होगा, इट विल बिकम अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट विल बिकम अ लीगल इंस्ट्रूमेंट इफेक्टिव अंडर फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट. अब लीगल स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीजें हैं? सो द बायर ऑब्लिगेशन टू पे ऑन द ड्यू डेट इज अनकंडीशनल. इन्फोसिस मुकर नहीं सकता, उसे वो पैसा देना ही होगा. ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस 2 महीने बाद कहे अरे यार वो एक्स कंपनी के कंप्यूटर अच्छे नहीं थे, कंप्यूटर वापस ले जाओ. ऐसा नहीं हो सकता. अब अगर आपने एक बार इनवॉइस एक्सेप्ट कर लिया ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, यू हैव टू मेक द पेमेंट. The seller must declare that receivable is already financed elsewhere and it is not already charged to another lender. So when you will be registering your factoring unit or you will be registering your invoice as a seller, मैं X हूं, तो मुझे वहां पे explicitly ये मानना होगा, रिटर्न में देना होगा कि भैया ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इनवॉइस है, इट इज नॉट फाइनेंस्ड एल्सवेयर. इसके बदले मैंने कहीं और से पैसा नहीं लिया, मैं पहली बार पैसा लेने आ रहा हूं और मैं इसे डिक्लेयर करता हूं. सो द प्लेटफॉर्म मस्ट ऑल्सो फाइल द असाइनमेंट विद द सेंट्रल रजिस्ट्री. तो यू विल बी फाइलिंग एज अ प्लेटफॉर्म ऑपरेटर, यू विल बी फाइलिंग द असाइनमेंट विद द सेंट्रल रजिस्ट्री. तो सेंट्रल रजिस्ट्री पे लिखा जाएगा कि नाउ एक्स की जगह F3 is liable to receive the funds from Infosys on the due date. So this legal part is the heart of trades because a receivable becomes a recognized financial claim, not mere a commercial promise. तो जो पहले एक invoice था जिसपे Infosys ने कहा था I'll make the payment, वो एक तरह से commercial promise था, but the moment it has been registered on the trades platform, it has now become a financial claim और Infosys उससे भाग नहीं सकता. Remember that this assignment to the financer is what gives the financer legal standing, while the buyer's set of defense is intentionally restricted to keep receivable market and reliable. इसका मतलब क्या है कि सर जैसे ही ये असाइनमेंट किया जाता है, the moment this invoice is transferred from X to F3, it will become a legal instrument and वो legally valid है, जिसकी वजह से F3 can sell it further to F4, F4 can send it further to F5, F5 can sell it further to F6 until the due date, and this rediscounting can be done on different steps by different finances whenever required. अब ये क्यों possible है? Because it's a legal instrument now. You have a financial claim under a law which can be challengeable. अगर Infosys ने पैसा नहीं दिया, you can directly challenge the Infosys, but you cannot challenge the X because X ने already अपनी जो rights of receiving funds हैं वो ट्रांसफर किए थे F3 को, F3 ने ट्रांसफर किया F4 को, F4 ने ट्रांसफर किया F5 को और F5 ने ट्रांसफर किया F6 को. ये जो न्यू फ्रेमवर्क है, इट कंटिन्यूज विदाउट रिकर्स प्रिंसिपल. इसका मतलब बायर्स डिफॉल्ट, अगर Infosys डिफॉल्ट करता है, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ X or the trades platform, it will be responsibility alone and alone of the final financer जो भी होगा. तो भैया अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. अब आप कोर्ट जाओ, जो भी लीगल प्रोसेस फॉलो करना है वो फॉलो करो, बट आप X से या फिर X मतलब MSME से या फिर आप प्लेटफॉर्म से पैसा नहीं मांग सकते. दैट इज नीड टू बी वेरी क्लियर. अब इसमें इंश्योरेंस, गारंटी कवर, ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं? एट द सेम टाइम RBI has now allowed the financiers to use insurance for trades transactions with the condition that insurance premium cannot be charged to the seller and that credit insurance will not count as credit risk mitigation for prudential benefits. इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट को ध्यान से समझता है. मान लो X और Infosys, ये दो पार्टीज थी हमारी. अब हमारा टाइम आ गया कि हम F3 को नाम दें. लेट्स से दिस F3 इज SBI. तो SBI ने ये इनवॉइस परचेज कर लिया फ्रॉम X
Now F3 means SBI is eligible to receive the funds from Infosys. अब अगर SBI ने इसे इंश्योर करा भी लिया किसी इंश्योरेंस कंपनी से, still SBI has to maintain provisioning. Still SBI has to maintain provisioning as per its risk weighted asset scenarios. कि भैया अगर मान लो standard risk associated with this invoice is, let's say, 100%. So उस केस में provisioning is need to be done 100% by SBI regardless of the fact that it has went for insurance. तो आपने इंश्योरेंस किया, वो बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रोविजनिंग मेंटेन करनी है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सेम. ठीक है जी, इज इट क्लियर? Now, RBI also permits financiers to avail guarantee cover from the Government of India Credit Guarantee Fund Trust for the factoring unit. In 2023, important point, RBI has already broadened the scope through insurance, wider pool of financiers, secondary market transfer of factoring unit. That means this factoring unit can be transferred in the secondary market and there it can be traded, and the settlement of unfinanced units through NACH. The 2026 directions now consolidate that evaluation into the single master direction. तो जो भी conditions 2018 में आई, 2014 में आई, 2023 में आई, उन सबको मिलाकर एक सिंगल मास्टर डायरेक्शन बना दिया आरबीआई ने, जो आरबीआई करता आ रहा है फॉर डिफरेंट मास्टर डायरेक्शंस और स्कैटर्ड सर्कुलर्स. तो उसके लिए एक सिंगल मास्टर डायरेक्शन अब आ चुकी है. द न्यू डायरेक्शन ऑल्सो परमिट फर्दर डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग, एज आई सेड, F3, F4, F5, F6, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इवन दिस इज effectively regulated secondary market for receivables already financed on the platform. So effectively the regulated secondary market for receivables already financed on the platform, तो वो एक secondary market का part बन जाएगा, जहां पर F3 is selling it to F4, F4 is selling it to F5, F5 is selling it to F6. ठीक है, अब settlement कैसे होगी वो भी समझ लो. RBI say that the platform is responsible for facilitating efficient and seamless settlement between the financiers and seller, between the buyer and financer, and using any authorized payment system. तो भैया X और F3, तो F3 जो पैसा देगा X को, that will be done through the platform into the account. F3 को जो पैसा मिलेगा Infosys से on the due date, that will be again done through the platform into the bank accounts. It also says that settlement mechanism can be used for finance, discounted or unfinanced transactions, as well as for insurance premium collection, claim settlement fees and commission. तो जो आपने settlement platform बनाया, it is not only for settling down or it is not only for making the payments against these invoices. अगर मान लो कि यहाँ पे F3 ने कोई इंश्योरेंस भी कराया अपने इस इनवॉइस का जिसको उसने डिस्काउंट किया, in order to make the insurance premium payment, they can use the same platform सिस्टम. तो जो प्लेटफॉर्म का पेमेंट सिस्टम है उसको यूज करके आप प्रीमियम दे सकते हैं, और उसी प्लेटफॉर्म के पेमेंट सिस्टम से यू कैन रिसीव द क्लेम एज वेल इन नियर फ्यूचर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग. So this is broader than the earlier framework which had described a more specific flow. पहले क्या था, invoice or bill gets converted into factoring unit, bids are received, funds flow to the MSME and buyer payment is made to the financer on due date. पहले ऐसा होता था, लेकिन अब उसके अलावा भी जो extra operations है which are happening on the same platform, they can be settled by the platform provided payment system. उसमें अब कोई problem नहीं है, that has been allowed. The earlier guidelines also emphasize that defaults by the buyer are handled outside the trades platform. तो पहले क्या होता था, if there is any default done by the buyer, that are handled outside the trades platform and are not platform's responsibility. The 2026 direction keep that logic but widen the settlement functionality across more transaction types. तो आज भी यही है कि अगर सेटलमेंट नहीं हुई, अगर आपके इन्फोसिस ने पेमेंट नहीं की, तो प्लेटफॉर्म का उसमें कोई कसूर नहीं है. प्लेटफॉर्म इज नॉट एट एनी फॉल्ट. प्लेटफॉर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट, इज नॉट लायबल टू मेक एनी काइंड ऑफ पेमेंट, but platform will help in making the transactions done. Platform will help in completing those transactions done. ठीक है. अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूं, the new direction require annual reporting of net worth certificate. So you have to report your net worth certificates. You means the platform operator कि मेरा जो net worth है it is still 25 crores.
सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट शुड बी सेंट, मंथली सबमिशन ऑफ ट्रेड स्टैट्स कि भैया इस मंथ कितने ट्रांजेक्शंस हुए, कितने सेटल हुए, नॉन पीरियोडिक रिपोर्टिंग व्हेन देयर आर चेंजेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज होंगे देन यू हैव टू गो विद नॉन पीरियोडिक रिपोर्टिंग। मान लो पिछले महीने वाली रिपोर्टिंग थी, 15 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हुए तो 15 दिन बाद दोबारा रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आरबीआई प्रेफरेंस फॉर ऑनगोइंग प्रूडेंशियल मॉनिटरिंग, नॉट जस्ट एंट्री स्टेज लाइसेंसिंग, ट्रेड्स बीइंग ट्रीटेड एज लाइव रेगुलेटेड यूटिलिटी। तो इसका मतलब आरबीआई क्या कहता है कि आई विल नॉट बी वॉचिंग द ट्रेड्स कि हाउ ट्रेड्स इज giving how trades will be given the license. I will be responsible to give the license, and even I will be acting as a watchdog where I will be checking around the day-to-day operations, the day-to-day transactions which are happening on the trades platform. ये सारे काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो इसके लिए सारे के सारे टर्म्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, फैक्टरिंग क्या है, फैक्टरिंग यूनिट क्या है, रिवर्स फैक्टरिंग का क्या मतलब है, विदाउट रिकर्स का क्या मतलब है, सीईआर एसएआई का क्या है, केवाईसी या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का यहाँ पे क्या रोल है, क्रेडिट गारंटी कवर, क्रेडिट इंश्योरेंस, असाइनमेंट, ऑल द टर्म्स जो मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं, बताई भी हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख के भी दे दिया। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप एक बार ध्यान से इस पूरे इमेज को देखो। अब आपको ये भी पता चल गया सेलर बैंक, बायर बैंक, पेमेंट सिस्टम, you know what is CER, SAI, what is its role, you know auditor or system auditors, you are aware of it. Then risk controls में KYC and customer due diligence of the buyer will be done, MSME validation of the seller will be done, no doable financing declarations, no set off after acceptance, मतलब after acceptance you cannot set off against the goods कि भैया ये लो अपना कंप्यूटर वापस ले जाओ, मैं पैसे नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। Now that's not allowed. Secure platform with audit trail will be available. RBI oversight में RBI will be responsible for authorization. So RBI कहता है कि TREDS platform is authorized under Payment and Settlement System Act 2007. Any party which is eligible to run a payment system will be eligible to run a TREDS platform as an operator. But you should have net worth of 25 crores और annual net worth certificate submit करने होंगे और monthly stats reports देनी होंगी। This is the entire story I have for this particular discussion. अब इसमें एक एक पॉइंट जो मैंने समझाया वो इंपॉर्टेंट है। वर्किंग इंपॉर्टेंट हो गई, चेंजेस इंपॉर्टेंट हो गए, अपडेट्स इंपॉर्टेंट हो गए, और जो एक्चुअल डे टू डे ऑपरेशंस है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल बी मूविंग अहेड। डन, नो मोर डाउट्स? ठीक है, तो इससे रिलेटेड आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी गिविंग मी द आंसर्स। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं, बाकी 4 क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क। सो ट्रेड्स के बारे में वी हैव अ फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रेड्स इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स एमएसएमई कन्वर्ट अनपेड इनवॉइसेस इनटू अर्ली कैश, दैट इज ट्रू। Trades work through multiple financiers competing on the same receivable, that is true. Trades is designed only for large corporate sellers, not MSME, ये तो गलत है। बेसिक फायदा तो जो मिल रहा है that is given to MSMEs only ना। The platform facilitates uploading, accepting, bidding, discounting and settlement of invoices, that is true. Trades is meant to solve MSME liquidity problem, that is true. तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो आंसर क्या बनेगा? सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट। तो आज के लिए मैंने छोटा ही रखा था इस सेशन को, ज़्यादा बड़ा रखा नहीं है। तो 4 क्वेश्चंस हैं,
which I will be giving you as a homework. तो वो चारों क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे. अब क्वेश्चन ये है कि सर ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ से? तो आई डोंट नो वेदर द टेलीग्राम इज स्टिल वर्किंग, हैज स्टार्टेड वर्किंग और नॉट. आप मुझे बता दो, टेलीग्राम चलना शुरू हो गया? सौरभ नहीं ना? इफ यू आर एलिजिबल to operate as a payment system, then only you will be eligible to run the operations. That means you will be eligible to run the Threads platform. Second is, if you want to be a financer, in that case, either you should be a bank or an MSME, NBFC factor, or any other institute which is allowed under the Factoring Act. तो अगर आपका फैक्टरिंग एक्ट इंडिविजुअल को अलाउ करता है, देन यू आर अलाउड. इफ योर फैक्टरिंग एक्ट डज नॉट अलाउ, देन एज एन इंडिविजुअल यू कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द सेम. अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या फैक्टरिंग एक्ट अलाउ करता है या नहीं? अब उसका आंसर आप लोग मुझे देंगे. चेक करना. द क्वेश्चन इज डज द फैक्टर रेगुलेशन एक्ट अलाउ एन individual to act as a factor, to act as a financer? तो आप मुझे ये चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अदरवाइज आई विल बी गिविंग द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन. तो मैंने आज सेशन छोटा रखा था, न्यूज एक ही थी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है फेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू से और नबार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज एसबीआई एंड अदर बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जरूर इसे कवर कीजिएगा. और इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर यू कैन एक्सपेक्ट अ पैराग्राफ ऑन द सेम. If you are preparing for bank exams, you can surely accept a paragraph on the same, maybe in your English paper as well. क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं. तो दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड. डन. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन आफ्टर सो लॉन्ग, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगा. बट हाँ, वो फ्लो बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा. इट वॉज अ ब्रेक. तो लगता है कि एक आधे दिन में वो फ्लो बन जाएगा. टुडे आई वाज बिट ओवर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. शायद बहुत दिन हो गए तो मुझे लगा ये भी बता दूं. एक आधे दिन में आई विल कम टू द फ्लो एंड इट विल बी सीमलेस एज ऑलवेज. ठीक है. तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन द आंसर्स ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस, एज वेल एज डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. आर यू हैप्पी विद द न्यू, or are you happy with the beginning, or I would say the re-beginning of your finance norm session? तो अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर कीजिएगा. व्हाट्सएप पे, मेल्स में मैंने काफी फीलिंग्स आपकी देखी हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस नॉर्म. यू वर मिसिंग इट, आई वाज आल्सो मिसिंग द सेम. बट नाउ लेट्स सी what you feel about this particular session in the comment section. Bye bye guys, take care, good luck, catch you in the upcoming sessions to go. Bye bye.